Hello everyone, welcome to Study Capital YouTube platform. Just let me confirm whether you can hear me or not. Please confirm with the chat box so that we can start discussing important things related to your exam. Can you hear me? Just confirm so that we can start. And I'm also checking it on my phone. So in a minute, I think we can start. Yes, okay. Perfect. Can you hear me? So welcome to YouTube platform, Study Capital YouTube platform. This is Atul Mishra, your mentor for CUET PG 2026 entrance examination. And if you're watching it for the first time, if you're here on this YouTube platform for the first time, I must tell you that I am here mentor for the English Literature program for PG and NET examination. And we are here today to talk about the syllabus of CUET PG English program, which I have already done as well in the last few months. If you'll go back and check the syllabus, check the playlist of English literature from the channel, you'll find few videos there. But I'll do that in a way that you can actually start from now. Your examination date is already been announced, so you have around 45-50 days from today to prepare for the for this exam. If you want to go to somewhere like universities like JNU, BHU, DU, Hyderabad University, IFLU, and if you want to know how to prepare, what to prepare, because you only have 45-50 days now, if you have that anxiety in your mind, that means you are in a right video and you're watching. I'm going to tell you what are the things that you can explore and read, and we'll be doing that with you in this YouTube platform from here onwards. Okay, so before any delay, let me just start with the syllabus. I'll show you the syllabus first, and then I'll tell you what are the things that you can actually look into it. The paper pattern is very similar to the way it has been from the last 2 years. There is no major change as such. The syllabus is also not changed. The syllabus that was there in the last 2 years. Last year there was one change that has been done here, but other than that, it's all same. That that you have to read history of English literatures. There are 2 sections. You can see the first unit itself suggests history of English and Indian literatures. I told to the batch students of our as well in today's class only, Radhakrishnan says Indian literature is one but written in many languages, and we know the kind of regional outpouring we have in terms of literature in today's time frame, especially in India. We are not only reading Indian literature in English, there is Hindi literature as well, there is Sanskrit literature as well, the classical Sanskrit writings as well, Kalidas and others, and even before that as well, Bhasha and others, the whole tradition of criticism in India as well as literature in India from Sanskrit literature, from not only the reason but also the language that it contains. So we have Bengali literature, we have Odia literature, we have Tamil literature, we also have Telugu writers who are writing, Malayalam writers who are also part of diasporic studies, which is also one unit that is a part of your syllabus. Marathi literature, the Dalit literature, which is now turning into one of the canonical text writers like Arundhati Roy and others. They are also writing some of the important texts in that field. Saran Kumar Limbale, a recent question in the NET examination as well. So we do have writings from different languages as well, and that is why when you look at the first unit, it says history of English and Indian literatures, not just Indian writing in English. What you have to read there: major authors, text and literary movements. Now it's very easy to understand if you have read any of the texts from British literature. If you are a student of British literature, right, English BA English honors, then you might be knowing that your history of English literature unit is divided into certain parts. You have ages, right? So you have, for example, Victorian period, Romantic period, literary, writers from different ages. Now in those writings, what is your syllabus is suggesting you that you have to read the major text. Just a second. You have to read the major authors. You have to read text. There is no mention of major text or minor text. The phrase that is mentioned here is simply text. And literary movements, not the historical movement, not the socio-political activity, simply a literary movement. That means when you, for example, I'll take example of any one era from British literature only. Suppose if you are taking Victorian period, right?
and simply based on this unit as well, I'll show you how from one age itself you'll find different dimensions that needs to be explored from this age. So it says major authors. Suppose if you are taking Victorian literature and you have to talk about major authors from that period, and you think about the novel writers, you can divide it into genre wise. There are dramas also written, although the drama, if you know the 1737 licensing, what happened to drama, but still there are poetry writers as well, and there are prose writers as well, right? And then there are short story writers, and the genre goes on. But particularly the four major genres that you have, you can talk about different types of novel: picaresque, epistolary, Bildungsroman, female Bildungsroman, types of female Bildungsroman, and it goes on, right? Simply drama, in terms of Victorian, there is realistic drama, writings of realism, writings of naturalism, right? Problem plays at the end of it, what to say, drama of ideas, right? And goes on. When it comes to poetry, we have poets who are writing dramatic monologues, right? Dramatic monologues. We have narrative poetry, narration and narrative poetry, right? And verse poetry, verse drama. Like for example, if you read Aurora Leigh's verse drama, right? These are the genres. I'm simply mentioning the name of genres that exist during the Victorian period, and list goes on. If you read about the novels, particularly social novel, and if you Google, social novel, and read the Wikipedia page of the social novel, you'll find there are 20 different names for only this form of novel. And then there are spoon novel, silver folk novel, and different versions of novels being written. Because you'll not understand if you don't know the background, the historical background of this age. For example, 1832 Charter Act. That is how working class literature, working class rights came into existence. People started talking about it, right? And then you have exhibition that's happening in 1851 to show the power of England. Right, Queen Victoria doing all those things. Then there are movements like, for example, you only have to take care of literary movements. So there is Oxford movement, right? Oxford movement, a kind of a religious Tractarian movement. So it's not literary movement, but you have people like Cable, Newman, who have written texts like Idea of a University, which was asked in the in the CUET, JNU entrance examination in 2020. Right, so Tractarian movement and all those terms that you coined. Then you have Pre-Raphaelite Brotherhood, again a group of particularly painters, but what they used to do, they will create a painting and then they'll write poetry about it. The Blessed Damozel, the Portrait, and famous poems that you find out in the Victorian period, they all were from Pre-Raphaelite Brotherhood only. They also created their own magazine called Germ, right? I'm only talking about genres here. I have not entered into major authors yet. And this is the kind of outpouring that you have. In terms of prose writings, you have, for example, Carlyle, the text that he has written, the commentaries that he has written on people, the essays that he has written on people, is another such genre that you can explore. Now, if you have to explore, if you have to read only this, I'm giving you only one age, and 45 days you have for now. Right, and I'm only taking one age. It's very difficult to read all those things. Now, if I give you the name of authors, there is, in terms of novel writing, for example, you have Dickens, you have Hardy, right? You have Bronte sisters. I'll come in a minute, okay? And then you have people like the whole Bronte sisters. George Eliot is there. Okay. George Eliot, right? These are the major authors, okay? I'm not taking the names of the minor ones. These are the major novel writers. When it comes to poetry, you have, for example, Browning, right? You have Tennyson, you have Arnold,
Arnold himself considered him as the third important writer. He wrote a letter to mother and talks about Browning and Tennyson there. Very interesting discussion. You have Hopkins, who was Victorian in the time frame in which he was writing, but is very modern. His sprung rhythm will inspire what we call, free verse in the modern period. Imagism was highly inspired by the writings of Hopkins, and these are only the names of the major authors. If I start talking about the minor ones, it will take me 1 hour to discuss, because the wife of Browning, for example, right, Tennyson's son, and there are many other people who will be writing during this period. That means the whole unit that is given to you, the major author section that is a part of your syllabus, will take you around 250 writers in, particularly in British literature. And if I start talking about those writers, if I can give you a list, for example, of those writers who are important for your exam point of view, you don't have that much of a time now to go through it, but I'll give you a survey of the writings that you can go through. For example, the very first writer that is important for your exam point of view is Chaucer. Now, if you're a student of English literature, your syllabus starts from here only, right, in your graduation. So you'll be reading his French period, his French influence, then his influence of the, what we call, when he was writing the Roman influence, how he had, and finally the English period at the end of his career, where he wrote the Canterbury Tales, right, the Canterbury Tales. Now, this is one single text which is very important for you. In today's class only, in today's paid batch class, I was talking about a writer called Peter Ackroyd, who has written a postmodern retelling of this text called the Canterbury Tales, which was also asked in one of your exams, right? So Chaucer was the first writer, not the first writer, but he was the one who converted East Midland dialect into English, and that is how English came into being the way we read it. So there is also old English period, there is also in Middle Ages, and within Middle Ages, in the age of Chaucer, you have writers like Chaucer and the contemporaries of Chaucer. You have Wycliffe, for example, who translated Bible. So biblical translation is another one such thing that you can explore. But Chaucer was the first writer that you have to read it in detail, especially the text called the Canterbury Tales. And then I'm not mentioning the name of the contemporaries of Chaucer because they are not major authors, although they have done something very important for you. So there is a list of biblical translations, right? For example, Wycliffe's translation, how it is different from Tyndale's translation, how Coverdale's translation, which was the first published complete English translation, is different from these translations, how 1611 James I's authorized version of Bible translation is different. So there are many translations from where they have already asked question, and Wycliffe was the one who started translating. He was the one who translated the Latin Bible into English for the first time. So he is also contemporary. Langlet is also contemporary, but I am not taking their name. They are not the major authors when you start framing what we call the canon, right? If you have read, for example, a text by Harold Bloom called the Western Canon. Let me show you the list of writers from there, right? If it is available, just a second. And even if it is not, just a second. Ankesh, if we'll read Harold Bloom's text called the Western Canon, he is the one who will talk about इसको कैसे back करें, हमको उसको चलाना है, पेन चल रहा है. Okay, just a second. Okay, so if you'll read Harold Bloom's The Western Canon, he talks about 26 writers whom we can consider as who are the one who have created the canon. Now there is a politics of canon, obviously, because what is a classic is one such essay, right? So for you, you can consider one text as classic. For me, I can consider another text as classic. But there is an attempt to frame which are the major texts, the canon, how the canon is created. Harold Bloom says Shakespeare is the canon. He mentions 26 writers from British literature who have created what we call canon. Now there is always inclusion and exclusion. Shelley, Keats, they were not the part of the canon before. But the way they have interpreted, the way they have been read during the modern postmodern period, now they are the part of the canon. So you can also use that list
to talk to read the writer in detail. 26 writers that are available in the Western canon by Harold Bloom. The list is available on Wikipedia. But I'll suggest you not to do that. Why? Because then you'll be limited to the 26 writers. But what I'm going to tell you is that there are around 50 writers, and in this YouTube live class today, I am only talking about the first part of this syllabus, and I'll give you the names of these writers so that you can read them in detail. At least you should know in which age they were writing. Right, what are the texts that they have written, if there is important story, the story of those texts, because major texts are also part of your syllabus. Thus only the text is mentioned. That means you need to read these writers in relation to the text that they have written. Their biography is not that important. They are not going to ask you Chaucer was born in which place. The name of the place is not important, although they may ask this question as well, because Shakespeare is an important writer. You must know the whole biography, but the purpose is you should at least know in which age he was writing, the text that he has written, the characters that he has created. Alright, these are the things that you should remember. So the first one is obviously Chaucer. After Chaucer, there is a, obviously, if we leave the age, we have the around 150 years of period, which we call Age of Darkness. We do have British Chaucerians, Scottish Chaucerians. No need to read about them for now. What you can do is, there is a text called Utopia. And from Utopia, you have this whole unit of utopian novels. Right? And you know, whenever you think about utopian novels, utopia itself takes you to dystopia. So you also have dystopian novels. And if you are a well-read student, you might be knowing the difference between, there's also a term called heterotopia. Foucault. Right, I'll talk about post-structuralism in some other class, which is a part of your syllabus. So you must know what is heterotopia. Right, and you'll get to know about it only when you know what is a utopia. Who wrote Utopia? 1516, Thomas More. Later on it was translated into English. It was originally a Latin text. Ralph Robinson will translate it into English in 1551. And when you read about the text, how it is divided into two parts and what does it mean to the term itself, and the name based on that, the ideal society, like the way Plato wanted to create an ideal society in his Republic. So Republic can also be considered as an utopian text. But the term came into existence with Thomas More's text called Utopia. So you must know few names of the utopian novels, few names of the dystopian novels. Today only I was talking about Orwell in our class. And you know Orwell is one of the very important writers who wrote 1984. We talked about Brave New World. And there's a list. I'll not give you the list because it will take me again 1 hour to talk about it. But what you need to know is, you need to differentiate between which is an utopian text, which is a dystopian text, what is heterotopia, what does the term means, what is utopia, what is dystopia, because later on you'll also have a speculative fiction, science fiction in your syllabus, which you'll have to develop. So if you don't know this, this is important. And this started from what we call the Age of Darkness. We have a term called utopia, framed during that period. So after reading that, you can leave the whole the Age of Darkness movement, and you enter into what we call the Elizabethan period. Now within the Elizabethan period, in terms of poetry, we have Sidney, we have Spenser, we have Shakespeare. These are the major poets. Right, in terms of what we call theatre, first you need to know the history of the theatre. Very important. So many times they have asked about when the theatre was created, for example. Right, the names of the theatres that were there, like Globe, right, Blackfriars, Curtain. And before the theatre, we also used to have playhouses. The Red Lion, for example. So you should know who created the theatre, who was the one who owned the playhouse before the theatre. The same person will create the theatre. Then Globe, Shakespeare also has some share in it. Blackfriar, the first closed theatre. Curtain and Swan, and the list goes on. So you should know the names of the theatre first. Very important question. Also the actors, the companies, like the Lady Chatterley's Men, Admiral's Men, they were all the companies which used to perform plays. So this is that aspect which must be known, because they are asking questions from there. But other than that, if you just focus upon the playwrights, you have university wits, 7 writers there,
right, and as well as Shakespeare himself, right. In terms of writing, I think during the Elizabethan period, these are the important writers. Now, if I start telling you what to read in Shakespeare, again you'll take 2-3 days to read Shakespeare only. There will be 2 questions from Shakespeare anyhow. I have not seen any question paper in the last 10 years related to CUET PG. 17, I have seen papers from 2017 to 2026, almost 9 years, and I have not found any paper where they have not asked questions from Shakespeare, at least 2 questions, right. So I'll tell you what kind of questions are framed. That's a different thing, but you have to discuss that as well. Now, what to read in them? Again, Sidney is an important critic as well. So one text that you read is Apology of Criticism, to whom he is responding, Apology of Poetry, right, of poesy, or Defense of Poesy, 2 names given to it, right. Now, as a critical text, one of the very important Renaissance texts that you have to read it in detail, to whom he is responding, what were the 4 charges, how he tackled all, one by one, all those things, is one very important point. But other than that, I have seen they only ask basic questions from Sidney, like he wrote 1 act play. So what was the first play that he has written? What is the name of a prose romance that he has written? Arcadia. They will not ask you question in detail from Arcadia, or who were the characters and all those things. Nothing. We know that there is a play Arcadia as well by Tom Stoppard, and Tom Stoppard is a very important writer in the postmodern period, right. Guildenstern, Rosencrantz and Guildenstern are dead. Very important existentialist, what we call play, right. Absurd play, very important play written by Tom Stoppard. So that's a different thing. But Sidney will write Defense of Poesy, one text that you should read it in detail. In terms of Spencer, there is a term called archaism, and if you read the entry of M.H. Ibrahim's of it, you will find how beautifully Spencer used archaism in the writing of his very famous epic called The Fairy Queen, right. On the CUET level, usually I used to say that you have to read this text in detail. There are 6 books available, 6.5 you can say, but 6 books where we have 6 different knights symbolizing 6 different virtues. So if you can read, you must know which book, like for example, in which book you have friendship as a virtue, in which book you have female knight, only one text where you have female knight, one book where you have female knight. The first book where we have Red Cross Knight, virtue of holiness. So who is Red Cross Knight? Who is Una? The good church, the bad church, the Mary Scott's, Mary Scott's trial that is available in the text. Must know. I am telling you, the Fairy Queen is one text where they can ask questions from. Other than that, Spencer wrote sonnet sequence, Amoreti, right? Just the names of the works, Promethelian, Epithalamion. These are the names of the works that you should focus on. Just the names will do your work. The work that you need to read it in detail is the Fairy Queen, and not even detail, just the book names of the books, which virtue is there, who is symbolizing what is the aim of writing the Fairy Queen. Basic details around it. I don't think you need to go into detail and read about it, but the basic things will, do your work. Then you have, I'll first talk about university wits. In the university wits, the major writer is Marlowe, right? So one writer from where you have to read the text in detail. The text called Dr. Faustus. It is going to inspire so many writers, right? In history, if you have read Goethe from German literature, or the modern text based on Dr. Faustus, there are so many. So it's an important text, and you must read it. Other than that, Marlowe is also a poet, right? He'll write Hero and Leander and some other poems, but not all of them are important. There is also Jew of Malta, which will inspire Shakespeare. Now, for writing's purpose, you must read about Dr. Faustus, and then any other member who is a part of a university wits. You just need to think that what are the things that Shakespeare will borrow from the university wits. The whole purpose of reading university wit is to find out what they have given to Shakespeare. Shakespeare is Shakespeare today because of university wits. That is a thorough study. You will find almost 5 of these people died in 1590s, and after that Shakespeare started his career. So he'll borrow so many things. Like for example, he'll borrow euphemism, this euphemistic writing of way of writing text from Lilly, right? Or for example, the first critic of Shakespeare itself, Green, he'll call him the upstart crow. Or then for example, you have
chronicle writings in Lodge, right? You have Pale and his writings. So what you need to know is just one or two works. There are plot, sources for Shakespearean text. Just the names of those works will do. You don't need to go into detail and read about those texts. Only Dr. Faustus is one such text which has this, one thing that you have to give focus on. Then you have Shakespeare. Now, what to read in Shakespeare? It's a big question. Big question that you have. I have always advised my students that there are 8 texts that you need to know the summary of, right? There are 8 texts of which summary is very, very important, because they can ask questions directly from the text. They can mention the name of the characters and they can ask you which character is from, which text of Shakespeare. One such practice which I have seen, names of the clowns. So what you can do is, first you have to find out the name of the clowns. I am giving you a one way to read Shakespeare. Name of the fool characters in Shakespeare, in which text they are. For example, if I ask you the name of the fool from from the very famous text As You Like It or Twelfth Night, you must know the name of the fool character. Second, famous characters from Shakespeare. When I say famous characters, I mean characters like Falstaff. So if I say in which work you have Falstaff as a character, there are 3 works in which he will be there. Henry IV Part 1, Henry IV Part 2, Henry IV Part 3, Henry IV Part 1, Part 2 and Merry Wives of Windsor. A text which was written because Queen Elizabeth liked this character so much that she requested Shakespeare to write a play based on him, and he'll write Merry Wives of Windsor. Again, a very important text, but not for the CUET level. So just know some of the characters like Falstaff. Right? There are many famous characters, but Falstaff there's a famous honor speech that you'll find in Henry IV Part 1. It's an interesting story. So you can just Google the fool characters in Shakespeare. You'll find a list. If you Google famous characters in Shakespeare, you'll find a list. Third is cross dressing. So it's also a very famous theme in Shakespeare. You'll find how some of the characters will cross dress like if there is a female character, they'll cross dress like a male. It also comes with a problematic aspect, because if you know how the theatre was performed, so women were not allowed on stage. So all the women role were already being performed by men. And then you look at the story, if there is a woman character, you'll find in all of them, especially in Twelfth Night, you see what happens with the main character of the story. She, the shipwreck will happen, she will be on an island. In order to save herself, because the patriarchy and all those trauma that they have, what she'll do, she will convert into a page boy. So she will cross dress like a male, and she'll go into the prince court. So there are several such instances, like Portia in a court scene of very famous text, Portia, Shylock and all those characters that you read in Merchant of Venice. Portia will also cross dress like a Balthazar, a male lawyer. So all those examples are important for you. They can give you the names of the characters and the names of their cross-dressing characters, and you'll have to match them in, is one question that is very, very famous, and you must know the cross-dressing instances in Shakespeare. Then famous scenes also important, right? अगर मैं कहूँ कि बालकनी सीन किस वर्क में है, तो आपको पता होना चाहिए कि वो किस वर्क में है. जैसे एक बहुत फेमस टेक्स्ट है जो इसके बाद आएगा, शेक्सपियर की बाद की राइटिंग्स में है, वहाँ पे एक प्रोविसो सीन हमको देखने को मिलता है. अगर किसी को पता हो कि प्रोविसो सीन किस वर्क में आया था, तो प्लीज़ बताना. 2 कैरेक्टर्स हैं, लवर्स हैं, एंड दे विल बी डिस्कसिंग कि क्या शर्तें हैं बिफोर इंटरिंग इनटू अ रिलेशनशिप. सो वुमेन विल सजेस्ट कि ये मेरी शर्तें, इफ यू एग्री टू दोज then I'll consider you as my lover. And then the male character the lover will also suggest that these are my demands. If you'll agree with it, then only I'll be a part, I'll be in relationship. So this is a famous scene, proviso scene, not from Shakespeare, but from some other text of the Jacobean period. Of the next period that we'll be talking about, neoclassical. It's a famous scene. Must know, you need to know in which text the scene takes place. Similarly, in Shakespeare also you have several scenes, like for example if you think about the scene Act 3 Scene 2 in Macbeth, of which De Quincey will also write a text called On the Knocking at the Gate of Macbeth. Right, so he's writing because just after the death of Duncan, there's a knock, and what is the name of that scene? You must know that. If you'll just Google famous scenes, you'll find few names of famous scenes in Shakespeare, and it will be an easy thing to do. Then fifth thing is, then I'll after reading the name of the fools,
and in which text they are, famous characters, cross-dressing, famous scene. Then comes the question of chronology. Right, in order to understand the chronology, there are many people who give other ways, because there are 37 plays, at least 37 in text like Routledge. You'll find 39 plays, because there are two works which were written in collaboration, and there is doubt whether they were written by Shakespeare or not. 37 plays. Now there is a writer called A.C. Bradley, and this is a question which I am telling you. A.C. Bradley has written a text called Shakespearean Plays, famous text by A.C. Bradley, written in 1904. And he gave the chronology. A.C. Bradley's version is one of the finest version. You'll find what Shakespeare used to do, how he used to write comedies. If you see, there are history plays, history or Roman plays, right? Roman plays. Then there are famous comedies from somewhere around 1594 to 1600. Yeah, all the famous comedies that you can think of will be performed during this period. Then there are tragedies. Great tragedies like Hamlet, Othello, King Lear, Macbeth were performed somewhere around 1600 to 1608. And then the last period of ये storm type का period है, तो after the storm period जैसे tempest आएगा for example आखिरी में, right, Camberlin आएगा, ऐसे works. So what you need to do is again very difficult to understand how you need to frame it, because बहुत सारे works है. तो अगर आप इस डिवीजन को पढ़ो और इसमें दो कॉमेडीज के नाम याद रख लो इस पीरियड से, यहाँ से ट्रेजेडी से हैमलेट, ओथेलो, किंग लियर, मैकबेथ याद रख लो, और लास्ट से टेम्पेस्ट याद कर लो. मेजरली यही होता है कि इन चारों ग्रुप से एक एक वर्क दिया जाता है, क्योंकि चार ग्रुप्स हैं. एक ग्रुप पहला हिस्ट्री वाला, कॉमेडीज वाला, ट्रेजेडीज वाला, और लास्ट वाला जो टेम्पेस्ट कैम्बरलिन वाला फेज है. इन चारों फेजेस से एक एक आपको देगा वर्क और कहेगा अरेंज करो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में. तो इफ यू रीड A.C. Bradley's division, it will be an easy thing for you to remember that. Okay, this is also one question that you find in Shakespeare. Then you have his sonnets. Right, sonnet as a genre evolved a lot during the Elizabethan period. You have Sidney writing Astrophel and Stella. You have Spencer writing Amority. You have Shakespeare writing 154 sonnets. पहले तो किसको किसको कितने डेडिकेटेड हैं, 1 to 126, 127 to 152, 153 and 154th. 3 divisions, right? There is a person, Mr. W.H. We don't know who he was. First few sonnets were dedicated to him. Then 27 to 52, Dark Lady. Today we were talking about one such text, by Anthony Burgess, where we find a fictional biography of Shakespeare, and there is an attempt to know who this Dark Lady was. G.B. Shaw also wrote a play called Dark Lady of the Shakespearean Sonnets, right? And that is also an interesting text. And then the Cupid Lover. Now, I'll not ask you to read the sonnets, but if you have time, at least read sonnet number 16, 30 and 116, because these are the 3 sonnets prescribed across every university in India in graduation. So, major texts that you can actually explore. Other than that, there are 2 folios, 1623, 1632. Condell and Hemming were the 2 people who published this folio, where his texts were published collectively for the first time in 23 and 32 for the second time. There's also Thomas Thorpe, who published his sonnets in 1609. So you must know the name of these people as well. There are many other things that you can read in Shakespeare, but these are the things at least you should have in your mind. Then after Shakespeare, when we enter into the next period, and I'll collectively call it the first half of the 17th century, there is Jacobean period, there is Cavalier poets, and then there is 11 years of interregnum in between. So from 1603 to 1660, collectively I'll tell you few names that you should know. First is the metaphysical poets, very very important metaphysical poets like Donne, like Cowley and others. Metaphysical poetry. Members of the metaphysical poetry, their works, what is metaphysical conceit, who coined the term, things like that, and their poems as well. If you can read some of them, it would be a wonderful thing to do. Then there is also Cavalier poets, but you need the names of those works, writers, so that you can differentiate who is metaphysical poet, who is a Cavalier poet. No need to read these poems in detail, but yes. And then there is Milton.
Milton is again very important writer. They can ask you questions based on chronology as well, right? Questions based on famous texts that Milton has written, like Paradise Lost. Again, a thing that very important. But now what you can do, the story is you already know the story, I believe, because it's a story of Bible, and if you're a literature student, you already know the story. What you need to know is, right, I will not ask you to read this text in detail now, but if you'll read the Wikipedia entry of Paradise Lost, I'm telling you, you'll find the comments on Paradise Lost, comments from where they have asked questions directly from that Wikipedia page. Who commented, like the comment of Samuel Johnson on Paradise Lost, comment on William Black. He said Milton is in Devil's Party without knowing it. That question was also from the Wikipedia page. The name of the publisher, Simon Simmons, which is also a question recently in one of the exams. So that is also one question that you find. Other than the story, and then also the if you read the epic entry from M.H. Ibrahim's, it will tell you how this epic is different from other epics. There are 4 or 5 pointers that are mentioned in M.H. Ibrahim's. I'll suggest you to read that as well. Other than that, again, just the names of the work, like Lycidas. There are companion poems as well, Allegro, El Penseroso, Como, right? Some of the plays that he'll write, Samson Agonist. There's a closet play that he'll write, Paradise Regained is there also well. So names of the work will do. Other than that, there is also a text called Areopagitica, written by Milton somewhere around 1644, because licensing came in 1543. These are the writers that you have to focus in this period. Again, I'm telling you, if I'll start giving you the names, it will take me an hour to tell you the name, because there are so many writers. But if you have to read the major ones, and based upon the smart study that you need to do for the next 45-50 days, these are the things that you have to focus on in this period. I'm not giving you the historical background now. That will be a different thing. But this is what you have to read. Then, for example, if I talk about the whole neoclassical period, 1660 to 1785, which you can divide it into 3 parts. The Dryden age or the Restoration period, the Pope age or age of St. Augustus, or Samuel Johnson age or age of sensibility. 3 periods, right? Collectively they are known as neoclassical. There is a M.H. Abraham entry, Neoclassicism and Romanticism. Neoclassicism and Romanticism. Neoclassical period. And if you read that entry from M.H. Ibrahim's, it tells you how the neoclassical characteristic is different from the romantic characteristics. You know, there are pre-romantics as well, which will be writing during this period, what we call age of sensibility. So there is a group of writers, I'll come to that later. But that difference is very important. That means when you enter into the neoclassical period, what characterized as neoclassical is important, how it is different from the next age, that is romanticism. So before I start talking about the writers, the characteristic of neoclassicism and romanticism is important, which you'll get to know through M.H. Abraham's entry. Now coming to this age, what we call age of Dryden or Restoration, in terms of major authors, you have Dryden, who is the representative writer. And when you read Dryden, you know there is a poet laureateship. He was the first one to get the poet laureateship. So you should know, there was a question last year about the present contemporary poet laureate. That tells you that important poet laureates are important for you. Like Dryden, after Shadwell, Dryden there will be Shadwell, after Shadwell there will be Nahum Tate. Nahum Tate is famous because he wrote happy endings to Shakespeare. Shakespeare was not popular back then in neoclassical period. So what was the reason? Again, something that you need to explore. But there will be happy endings written on Shakespearean works. So because people thought that it is depressive text, right? So for that purpose, that is important. And these are the things that are taking place during the Dryden's period. There are also what we call comedy of manners. I forgot to mention Ben Jonson in the last age. Please mention that Ben Jonson is an important writer who will write comedy of humors as well. So his comedy of humors and name of some works, which like War of Theatre. So what was War of Theatre? How Ben Jonson was associated with that is important. And then also his contemporaries will be writing, for example, revenge plays
of Webster, just the name, city comedies, and domestic tragedies or domestic comedies. These are the genres of what we call Jacobean periods. You must know one or two examples from that, at least comedy of humors, very, very important. Similarly, last year there was question from comedy of humors. That means you can expect question from comedy of manners, or what we call restoration comedy. So great change happened in terms of drama. What were the changes? Like artificial light came into existence. Women were allowed to to what we call perform on stage. So we have writer like Ephra Ben, female writer, the first English female writer who will write for money, right? Very important, because Virginia Woolf will also mention her in her essay. It's a very important entry as well. So Dryden, Ephra Ben, some of the writers from comedy of manners, just the name of writers and the works that they have written, one or one. Just say, for example, there will be the plain dealer, there will be the double dealer, there will be the bath, the wife of the bath of tub. ऐसे करके 3-4 वर्क्स हैं और उनको किसने लिखा है. मैचिंग में बहुत फेमस क्वेश्चन है जो पूछा जाता है. That is what you need to prepare in the first half. Now when I talk about the 18th century, which is known as age of prose and reason according to Matthew Arnold, you have Alexander Pope, obviously. You also have Jonathan Swift. Right, this is also a period of periodicals. So you have a lot of periodical writers and periodicals as well with aim. So what is the aim of Spectator? What is the aim of Tetler? And then the chronology of Spectator, Tetler, and other journals, other periodicals, as well as magazines, the Gentleman's Magazine, the London Magazine, and it goes on. So they, you should know the names of periodicals. Famous one, as I mentioned, the Tetler, द स्पेक्टेटर, कब आते थे, कितने हैं, कौन फाउंडर था, कौन कोलैबोरेशन में लिखा है, कितने किसके पेपर्स हैं, एंड कब आता था, संडे पेपर था या एवरीडे पेपर था, और 79 से 11 कौन था, 11 से 12 कौन था, फिर periodicals में ही कि किसके contributions है, things like that, what you need to know. Then Jonathan Swift is there and Pope is there. There are also literary clubs, जैसे they'll be part of what we call Scribblers Club. There also be what we call Kit Kat Club. ये सब literary clubs हैं जो इस एज से स्टार्ट हुए. कॉफ़ी कल्चर हम बोलते हैं, तो यहीं से हमको काफ़ी सारे क्लब्स बनते हुए दिखेंगे. और भी कंटेम्प्रेरीज हैं इनके, बट ये दोनों राइटर्स इंपॉर्टेंट हैं. वर्क्स भी इंपॉर्टेंट है, जैसे इनके में फॉर एग्जांपल स्विफ्ट में आप गुलिवर्स ट्रेवल्स को डिटेल में पढ़ सकते हैं, वहाँ से क्वेश्चन आता है. टाइटल से ही क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है, पूरा टाइटल, पहले क्या थे, बाद में कैसे शिप के वो बने, पूरा चीज़ टाइटल ही एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट है. आई थिंक 1726 का वर्क है ये, राइट. और अलेक्जेंडर पोप में बहुत से अगेन वर्क हैं. ही वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट सटायरिस्ट, बट एटलीस्ट रेप ऑफ द लॉक, इसका भी अगर आप विकीपीडिया एंट्री डिटेल में पढ़ेंगे तो मशीनरी का कॉन्सेप्ट है, मशीनरी क्या होते हैं, कौन कौन से सेल्फ जो है इसमें यूज़ किए गए हैं, स्टोरी, 5 कैंटोस, एम क्या था, 2 पहले लिखे फिर 3 बाद में लिखे, कब पब्लिश हुआ, ऐसी चीज़ें, बेसिक चीज़ें विच यू कैन ऑल्सो गेट टू नो अबाउट इट फ्रॉम द विकीपीडिया पेज. मस्ट रीड है, जो एग्जाम में क्वेश्चन मिलता ही मिलता है, दैट यू हैव टू फाइंड आउट फ्रॉम दिस पीरियड विच वॉच यू आर कॉलिंग एज ऑफ Pope. The next period is Samuel Johnson period. Samuel Johnson itself, himself is a very very important writer. किस लिए पढ़ते हैं सैमुअल जॉनसन को, अगर कोई कमेंट सेक्शन में बता सकता है. देयर इज अ डिक्शनरी, फर्स्ट डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, आपको बताना है कि किस ईयर में आया. देयर इज प्रीफेस टू शेक्सपियर, should write it down. There is lives of most eminent poets, or simply lives of poets. There are 2 juvenile poems like London and City of Vanity, Vices. And within Samuel Johnson, these are the basic text. For dictionary you just need to know the publishing year. In preface to Shakespeare you also need to know the quotes, merits and demerits of Shakespeare, how he defended, like Dryden will be doing that in Essay of Dramatic Poesy in 1668. I forgot to mention that, so please remember that as well. So that as well,
राइट. देन लाइव्स ऑफ पोएट्स, 58 राइटर्स बायोग्राफी, बट एटलीस्ट काउलेस बायोग्राफी. क्या काउले की बायोग्राफी में कैसे टर्म कॉइन किया मेटाफिजिकल पोएट्स, क्या इस बारे में बात की है, दैट इज यू नीड टू फाइंड आउट. राइट. मिल्टन की जो बायोग्राफी है उसमें ब्लैंक वर्स पे डिस्कशन है, ब्लैंक वर्स को डिफाइन किया है, इट्स अ वर्स ओनली टू आई, वो चीज़ आपको देखनी होगी. राइट. ऑल्सो you'll have to find out what he said about other writers as well. Lycidas के बारे में क्या बोला है, because its form is pastoral, it is disgusting, this is what he said. कुछ चीज़ें जो आपको इस वर्क से देखने को मिलेंगी. इसके अलावा सैमुअल जॉनसन में आपको जो जुविनल पोएम्स, आई होप यू नो होरेशियन सटायर्स क्या होते हैं या होरेशियन ओड्स क्या होते हैं. होरेशियन ओड या होरेशियन सटायर, मिनीपीनियन सटायर या जुविनल सटायर हार्श होते हैं. इनमें डिफरेंस क्या है आपको एमएच इब्राहिम से एंट्री मिलेगी, उससे आप पढ़ सकते हैं. और जुविनल पोएम्स कौन है सैमुअल जॉनसन की, नाम इतना आपको पता होना चाहिए. बट सैमुअल जॉनसन के टाइम फ्रेम में ही एक ट्रांजिशन भी हो रहा है. द ट्रांजिशन इज वी हैव ग्रेवयार्ड पोएट्स राइटिंग ड्यूरिंग दिस पीरियड. 4 वर्क्स हैं ग्रेवयार्ड पोएट्री में. लगातार क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे एलिजी रिटन ऑन अ कंट्री चर्चयार्ड 1751 में पब्लिकेशन हुआ था, उस पोएम का 50 में लिखा गया था. बहुत अच्छी पोएम है, हम पढ़ सकते हैं कि क्यों जो चेंज आया, हम कैसे प्री रोमांटिक में इंटर करते हैं. उसके लिए एलिजी रिटन इन कंट्री चर्चयार्ड इज अ मस्ट रीड, पढ़ना ही चाहिए सबको, बहुत इंपॉर्टेंट है. बहुत अच्छे अच्छे रेफरेंसेज हैं जहाँ पे जो डायरेक्टली आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, तो कोई वे ऑफ स्किपिंग है ही नहीं, आप छोड़ ही नहीं सकते उसको. बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको पढ़ना है. 4 पोएम्स हैं बेसिकली ग्रेवयार्ड पोइट्री में और प्री रोमांटिक्स हैं. राइट. सो प्री रोमांटिक्स में आई विल नॉट सजेस्ट यू टू रीड एनी राइटर नाउ, दे आर नॉट द मेजर वंस, बट विलियम ब्लेक इज समवन हुम यू कैन सी, बिकॉज ब्लेक से W.B. येट्स इंस्पायर होंगे, ब्लेक से और भी राइटर्स इंस्पायर होंगे, वो आप देख सकते हैं. अलॉन्ग विथ इट, जब मैं न्यू क्लासिकल एज की बात कर रहा हूं, तो अगर आपने JNU के पेपर को देखे होंगे तो इस टाइम फ्रेम में कुछ फिलोसोफर्स भी हुए हैं. कांत है, हेगल है. राइट. बाद में आप मैरी वॉस्टनक्रॉफ्ट को पढ़ेंगे, शी इज ऑल्सो रैशनलिस्ट, रीजन बेस्ड राइटर. 1792 में वॉस्टनक्रॉफ्ट का वर्क आता है, विंडिकेशन ऑफ राइट्स ऑफ वुमेन, जहाँ पे उन्होंने रीजन की बात की. तो एवरीथिंग दैट इज रिलेटेड टू रीजन, इंटेलेक्चुअलिज्म, इंटेलेक्चुअल जिसको हम बोलते हैं, राइट, इंटेलेक्चुअलिज्म, विट, ये ये सारी जो फ्रेजेस होते हैं इनको हम न्यू क्लासिकल एज से कनेक्ट करते हैं. और ये जो फिलोसोफर्स हैं, जैसे पढ़ते हो आप, आई थिंक देयरफॉर आई एम, आई थिंक देयरफॉर आई एम, ये सारे आपको इसी फ्रेज में मिलेंगे. तो वो सब पढ़ने जरूरी है. जैसे मैंने I forget to mention during the Elizabethan period you also need to know Bacon. Bacon का 1597, 1612, 1625 के जो 3 डिविजन्स हैं, किस वर्क में कितने पब्लिश हुए हैं, कौन से एसेज हैं, हाउ ही वाज इंस्पायर्ड बाय मॉन्टेन इज अनदर थिंग दैट यू कैन एक्सप्लोर. राइट. नाउ कमिंग टू रोमांटिसिज्म. रोमांटिसिज्म 1798 to 1837. Lyrical Ballad was published there, right, in 98. So we have William Wordsworth. I'll just mention the name of the major writers. William Wordsworth. You have Coleridge. There's also Southey. I'll not mention Southey here because I don't think he's a major writer, but Southey is also there. Collectively they are known as lake poets. And then there is Keats, Shelley. There's also Byron, but again I'll not mention Byron. I don't consider him as a major writer, although he's an important writer. So these are the poets particularly. What interests me the most is, if you'll find, there are poems like, for example, I'll suggest you poems like To a Skylark. There's a poem like To the Skylark. And there's poem like Thy Skylark. Now I have seen 2 questions from these 3 poems in the last 2-3 years in NET, in CUET PG as well. Now आपने शायद शैली का पोएम पढ़ा होगा. इसमें से एक पोएम शैली का है, एक पोएम वर्ड्सवर्थ का है और एक पोएम क्लार्क का है.
राइट, 3 पोएम्स। यू हैव टू फाइंड आउट कि किसका टू आई स्काईलार्क है, किसका टू द स्काईलार्क है, किसका सिंपली द स्काईलार्क है। बहुत फेमस चीज जो आपके एग्जाम में, बहुत बेसिक चीज है लेकिन आपके एग्जाम में आ जाता है। राइट, वर्ड्सवर्थ में आपको क्या पढ़ना है? पहले तो लिरिकल बैलेड नहीं पढ़ना है, प्रीफेस टू लिरिकल बैलेड पढ़ना है, 1800 वाला जो प्रीफेस आया था 1800 में, प्रीफेस टू लिरिकल बैलेड। उसमें इनकी थ्योरी है कॉमन लैंग्वेज वाली, वो सारे आइडियाज आपको देखने हैं और कुछ वर्क्स के नाम जानने। ऑल्दो यू नो विलियम वर्ड्सवर्थ इज अ पोएट, पर इनके ड्रामा है। मैं आपको बता रहा हूँ ये चीज़ ध्यान रखना, रोमांटिक से और विक्टोरियन पीरियड से जितने भी राइटर्स अब ज़्यादातर पोएट्स पढ़ते हैं, इन्होंने प्ले लिखे हैं, नॉवेल्स लिखी हैं, और क्वेश्चन सिंपली ऐसे पूछ लेते हैं क्योंकि मेजर ऑथर्स हैं, मेजर पोएट हैं, तो इन पोएट्स की पोइट्री आप जानते हो, क्वेश्चन पूछ लेंगे प्ले का नाम या नॉवेल का नाम, जैसे शैली में है, जैसे बॉर्डरर्स नाम से वर्ड्सवर्थ में है, जैसे विक्टोरियन राइटर्स में ब्राउनिंग का मौत है, टेनिसन की राइटिंग्स है। तो एक बहुत बेसिक क्वेश्चन है, मतलब मेजर पूछना उनको पोइट्री से चाहिए, बट दे ऑल्सो आस्क द नेम्स ऑफ द ड्रामाज एज वेल, सो एटलीस्ट द नेम्स यू शुड नो। वर्ड्सवर्थ में प्रीफेस टू लिरिकल बैलेड के अलावा प्लीज रीड द पोएम टिंटन एबे एज वेल एज ओड टू इमॉर्टिलिटी। क्यों बोल रहा हूँ पढ़ने के लिए? क्योंकि इसका बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंस है, आपके पैसेज भी आएंगे। सो अगर आप ये दोनों पोएम्स पढ़ेंगे तो शायद पैसेज में आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे, दोनों ही इंपॉर्टेंट है। चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन वाली जो फिलॉसफी इनकी आप पढ़ते हैं, वो आप शायद इमॉर्टिलिटी वाला ओट अगर आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कैसे फ्रेंच रेवोल्यूशन से ही वॉज हाईली इंस्पायर्ड। दैट यू कैन रीड इन द टिंटन एबे एज वेल एज इन द ओड टू इमॉर्टिलिटी। देन यू हैव कोलरिज। कोलरिज का एक तो बायोग्राफिया लिटेरिया, right, 1817, जिसके it's very difficult to read, but what you can do, you can read about his difference between personal primary and secondary imagination, how they are different from each other। ठीक है, secondary imagination वो दोनों एक दूसरे से कैसे अलग है। his idea of willing suspension of disbelief, willing suspension of disbelief, right? Coleridge's idea of imagination versus fancy, सारी चीज़ें हमने क्लासेस में कवर की हैं डिटेल में अपने बैच के साथ में, बस रिवाइज करिए अगर आप स्टूडेंट हैं। इमेजिनेशन वर्सेस फैंसी एंड ऑल्सो हिज क्रिटिक ऑफ वर्ड्सवर्थ। 3 पॉइंट्स पे क्रिटिक है, बहुत एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, किसने कहा कि पोइट्री और प्रोज की लैंग्वेज सेम है, किसने कहा नहीं है। एक जो लास्ट पॉइंट है वर्ड्सवर्थ के क्रिटिक का कोलरिज में। ये सारी चीज़ें आप बायोग्राफी लिटेरिया में पढ़ते थे, मेनी चैप्टर्स बट एटलीस्ट दीज 3-4 चैप्टर्स यू हैव टू कवर। अलॉन्ग विथ इट देयर आर पोएम्स लाइक कुबला खान फॉर एग्जाम्पल, और एक जो बहुत फेमस पोएम है राइम ऑफ एंशिएंट मैरिनर, द फर्स्ट पोएम ऑफ लिरिकल बैलेड, राइम ऑफ एंशिएंट मैरिनर। ये तो ऐसी पोएम है जहाँ से आप एटलीस्ट 5 से 6 डिफरेंट टाइप्स ऑफ फिगर ऑफ स्पीच आप पढ़ सकते हैं, स्पेशली एलिट्रेशन के टाइप्स के लिए बहुत फेमस है। वाटर वाटर एवरीवेयर नॉर एनी ड्रॉप टू ड्रिंक, राइट, what happened to Albatross, famous lines from the poem, they can directly quote and ask you किस poem की ये lines हैं। तो ये एक important writer आपको उस period में मिलते हैं। Then वर्ड्सवर्थ और कोलरिज के अलावा there is कीट्स में again बहुत कुछ है, but 1819 के जो सोनेट्स हैं, ओड हैं, उन 1890s के 4-5 ओड्स के नाम आपको पता होना चाहिए, और ओड टू नाइटिंगेल आपने पढ़ रखा हो। That will do। अभी के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वैसे तो बहुत वर्क है कीट्स में, बट एटलीस्ट ओड्स के नाम और ओड टू नाइटिंगेल आपको पता होना चाहिए। इन्होंने निगेटिव कैपेबिलिटी का कॉन्सेप्ट दिया था। सो निगेटिव कैपेबिलिटी में इन्होंने शेक्सपियर को एक अच्छा राइटर बताया था, कोलरिज को क्रिटिसाइज किया था। क्यों, किस बेसिस पे क्रिटिसाइज किया, यू शुड नो दैट। इन्होंने ईगोस्टिकल सबलाइम करके एक टर्म कॉइन किया था फॉर वर्ड्सवर्थ, और वर्ड्सवर्थ को क्रिटिसाइज किया था। व्हाट इज दैट, यू शुड नो दैट। 3-4 चीज़ें जो आप कीट्स में पढ़ सकते हैं। ही डाइड वेरी अर्ली, 1821 में, और इनकी डेथ पे एडोनाइस लिखा था शैली ने, वो भी बहुत फेमस पास्टोरल एलिजी है, राइट। फिर आप शैली को पढ़ते हैं इसी पीरियड में। शैली का भी कई सारा पोएम्स है, जैसे टू द स्काईलार्क है, वैसे ही ओ टू द वेस्ट विंड है, मस्ट रीड पोएम है ओ टू द वेस्ट विंड। और आई थिंक
शैली को आप आपको पता होगा डिफेंस ऑफ पोइजी इन्होंने भी लिखा है, जिसमें पोएट्स आर द अनएक्नॉलेज्ड लेजिस्लेटर्स ऑफ द वर्ड करके एक लाइन है जो आपके एग्जाम में कई बार पूछी जाती है. जस्ट दैट विल डू फॉर नाउ. देयर आर अदर राइटर्स एज वेल. आई मेंशन थॉमस लव पीकॉक, 4 एजेस ऑफ पोएट्री विच यू रीड इन क्रिटिसिज्म, बट फॉर नाउ यू कैन लीव दैट. देन वी हैव ड्यूरिंग दिस पीरियड एज वेल वी हैव चार्ल्स लैम. प्रोज में चार्ल्स लैम के वर्क्स बहुत पूछे जाते हैं. हेजलिट के वर्क्स के नाम, करेक्टर्स ऑफ शेक्सपियरियन प्लेस एक करके वर्क है, बहुत फेमस वर्क है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है हेजलिट के वर्क से. चार्ल्स लैम से क्वेश्चन पूछा जाता है, डिक्विंसी से क्वेश्चन पूछा जाता है, राइट. ओपीएम एडिक्ट वाला जो वर्क है, या ऑन द नॉकिंग ऑफ द गेट एट मैकबेथ वाला वर्क है. ये 3 प्रोज राइटर्स भी हैं इस रोमांटिक पीरियड के अंदर जिनके बारे में आप पढ़ सकते हैं, मेजर राइटर्स हैं. देन इसके बाद विक्टोरियन पीरियड आता है. मैंने वीडियो की शुरुआत में ही आपको बताया था विक्टोरियन पीरियड में 1837 से 1901. पहले तो अगर आप केवल टाइप्स ऑफ नॉवेल पढ़ने जाएंगे तो न्यूगेट नॉवेल्स हैं, सिल्वर फोक नॉवेल है. ये पूछा गया था किस एज में सिल्वर फोक नॉवेल्स लिखी जाती हैं. एक बेसिक क्वेश्चन है पर क्या होता है आप पढ़ सकते हैं. सोशल नॉवेल्स हैं, तो टाइप ऑफ नॉवेल्स ही हो गया जो इतना आप पढ़ेंगे, राइट. इसके अलावा राइटर्स में जो मेजर राइटर्स हैं जैसे डिकेंस क्रोनोलॉजी के लिए भी इम्पोर्टेंट है. एटलीस्ट 3 वर्क्स, ग्रेट एक्सपेक्टेशन. आज क्लास में मैं डिस्कस कर रहा था ग्रेट एक्सपेक्टेशंस की 2 रीटेलिंग्स के बारे में. एक जो ग्रेट एक्सपेक्टेशन नाम से ही रीटेलिंग है, नेट का क्वेश्चन है. एक जैक मैक्स नाम से है, एक राइटर ने लिखा है जो ट्वाइस बुकर अवार्डी है, पीटर कैरी, ऑस्ट्रेलियन राइटर. 2 इंपॉर्टेंट रीटेलिंग्स हैं और वर्क भी बहुत इंपॉर्टेंट है. वैसे ही बिल्डिंग रोमन में आर्टिस्टिक बिल्डिंग रोमन जो होता है कोस्टल रोमन में, उसमें आपने डेविड कॉपरफील्ड का नाम सुना होगा, ऑटोबायोग्राफिकल सेमी ऑटोबायोग्राफिकल नॉवल, वन ऑफ हिज फेवरेट्स. और ओलिवर ट्विस्ट जो कि पहले लिखना चाहिए था ऑर्डर में, पर पहला चाइल्ड प्रोटैगनिस्ट आपको यहाँ पे देखने को मिलता है. सो डिकेंस इज इंपॉर्टेंट एटलीस्ट फॉर दीज 3 वर्क्स. कई सारे नॉवेला भी हैं. 26 दिसंबर निकल गया, 25 निकल गया, वरना उसके बारे में बात करते हैं, पर अभी के लिए यही 3 वर्क्स आप पढ़ सकते हैं. डिकेंस के अलावा जॉर्ज इलियट हैं. जॉर्ज इलियट के वर्क्स के नाम पते होने चाहिए आपको. सिली नॉवेल्स बाय सिली नॉवेलिस्ट करके एक वर्क है. शी वाज आल्सो द वन हु एडिटेड वेस्टमिंस्टर एबे. तो इंपॉर्टेंट नाम है. वर्क्स के नाम विल डू, बट ब्रॉन्ते सिस्टर्स फॉर एग्जांपल शैरलोट ब्रॉन्ते और बहुत सारे राइटर्स पेन नेम भी यूज़ करेंगे. तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, क्योंकि विक्टोरियन एज में अलाउ नहीं है अभी वुमेन को लिखना, तो पेन नेम्स मेजर राइटर्स जो फेमस राइटर्स हैं उनके पेन नेम्स आपको पता होना चाहिए. मार्क ट्वेन एक राइटर हैं, जॉर्ज इलियट हैं, ब्रॉन्ते सिस्टर्स हैं, और ऐसे बहुत से राइटर्स आप जानते होंगे उन्होंने पेन नेम्स यूज़ किए हैं. तो यू शुड नो कि पेन नेम्स कौन से हैं, ठीक है. फिर ब्रॉन्ते सिस्टर्स, शार्लोट ब्रॉन्ते, एमिली ब्रॉन्ते, एन ब्रॉन्ते, तीनों में एक एक टेक्स्ट. जैसे लास्ट ईयर देयर वाज अ क्वेश्चन फ्रॉम द स्टोरी ऑफ शार्लोट ब्रॉन्ते's टेक्स्ट कॉल्ड जेन आयर. 4 अलग अलग क्या किया, इवेंट्स दे दिए और आपसे बोला कि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाओ, एंड दैट वाज द क्वेश्चन, राइट. सिमिलरली द सेम क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड फ्रॉम वुदरिंग हाइट्स. आप अगर बायरन को नहीं पढ़ रहे हैं तो एटलीस्ट बायरोनिक हीरो क्या होता है वो पढ़ लीजिएगा, सो दैट यू अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस ऑफ वुदरिंग हाइट्स. One of the most important texts from the Victorian period. एन ब्रॉन्ते में just the name of work will do. एक वर्क है टेनेंट हॉल वाला जो कि पहला फेमिनिस्ट टेक्स्ट बोला जाता है. तो just the name will do. Their pen names will do as well. सब में बेल होगा, किसी में क्लारा बेल होगा फॉर एग्जाम्पल, किसी में एरल बेल होगा, एन बेल होगा. तो आसान है. सी वाले में सी है, ई वाले में ई है, ए वाले में ए है नाम में, और बेल बाद में आ जाता है. तो ईजी टू अंडरस्टैंड. बट ये राइटर्स हैं जो नॉवेल्स लिख रहे होंगे इस पीरियड में. और भी राइटर्स हैं, ऐसे मैंने बोला ठाकरे हैं. न्यूगेट नॉवेल आप पढ़ेंगे तो ठाकरे को अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है. देन टर्म्स ऑफ पोइट्री यू हैव ब्राउनिंग, यू हैव टेनिसन, यू हैव अर्नोल्ड एंड रॉबर्ट बैरेट ब्राउनिंग, पर उनके वर्क का नाम लाइक जो सोनेट ऑफ पोर्टुगीज है दैट विल डू, और पढ़ने की जरूरत नहीं है. 3 राइटर्स एटलीस्ट. और हॉपकिंस के टर्म से आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है. तो ये 4 वर्क राइटर्स को पढ़ना है. ब्राउनिंग के सब लोग बोले, अगर आप कहीं भी पढ़ेंगे तो आपको बोला जाएगा माई लास्ट डचेस पढ़ लो, माई लास्ट डचेस पढ़ लो, बहुत फेमस पोएम है. बट आई विल सजेस्ट यू माई लास्ट राइड टुगेदर.
प्लीज़ रीड दैट। अगर आपको समझना है कि ड्रामेटिक मोनोलॉग क्या होता है और साथ ही साथ अच्छे कोट्स जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, पोएट के बारे में क्या बोला, his ideas, then you should read My Last Ride Together, right? My Last Ride is already very famous poem. साथ में as I mentioned, ये राइटर्स जो हैं टेनिसन ब्राउनिंग फेमस पोएट्स हैं, तो इनके वर्क्स के नाम इंपॉर्टेंट हैं, कलेक्शंस के नाम इंपॉर्टेंट हैं। पास्टोरल जैसे पोएम्स लिखेगा टेनिसन, फॉर एग्जांपल इन मेमोरियम लिखेंगे, किसको डेडिकेट किया। पास्टोरल एलिजी इटसेल्फ इज़ अ फेमस टाइप ऑफ पोइट्री, तो इसको डिटेल में पढ़ना जरूरी है। पास्टोरल एलिजी एलिजी से कैसे डिफरेंट है, एग्जाम्पल्स एलिजी के, एग्जाम्पल्स पास्टोरल एलिजी के, एग्जाम्पल्स एडिल के, ये कैसे डिफरेंस हैं। फिर एलिजी में भी मोनोडी क्या होता है, थ्रिनोडी क्या होता है, ये सब अगर आप विकिपीडिया एंट्री पढ़ेंगे पास्टोरल एलिजी की तो आपको पता चलेगा, या आप इन मेमोरियम पढ़ेंगे तो उसके विकिपीडिया पेज पे भी डिफरेंस आपको देखने को पता चलेगा। उस सेंस में भी टेनिसन को आप पढ़ सकते हैं। पोएम्स भी हैं, यूलिसेस एक बहुत इंपॉर्टेंट पोएम है, लोटस ईटर बहुत इंपॉर्टेंट पोएम है, एटलीस्ट पढ़ना चाहिए, 2 पोएम्स तो पढ़ना ही चाहिए, क्योंकि आपको ओरिजिनल ट्रेडिशन से, होमर की राइटिंग से इसको अटैच करके आप पढ़ सकते हैं। देन मैथ्यू अर्नोल्ड एज अ पोएट, डोवर बीच एक इंपॉर्टेंट पोएम है, ग्रांड चर्ट्यूज एक इंपॉर्टेंट पोएम है जिसमें आप एक वो लाइन पाते हैं, 2 words 1 dead yet another is to be born, राइट। पोएम में एटलीस्ट डोवर बीच आप पढ़िए, वर्क्स के नाम जानिए, साथ ही साथ स्टडी ऑफ पोइट्री 1888 का जो वर्क है जहाँ पे आपको टच स्टोन मेथड के बारे में पता चलता है, क्रिटिसिज्म की डिफिनीशन पता चलती है, व्हाट इज़ बेस्ट इन द वर्ल्ड डिफाइन करते हैं, टच स्टोन मेथड डिफाइन करते हैं, राइट। टच स्टोन मेथड 3 डिफरेंट स्टीमेट्स की बात करते हैं, पर्सनल एंड हिस्टोरिकल विच आर फेलिसीज अकॉर्डिंग टू हिम, बट रियल एस्टिमेट इज़ व्हाट वी नीड टू फॉलो। सो ये क्या है, अगर समझ में नहीं आ रहा है, यानी कि स्टडी ऑफ पोइट्री को अच्छे से पढ़ने की ज़रूरत है मैथ्यू अर्नोल्ड में, ये आपको पढ़ना है। हॉपकिंस की पोएम्स ऐसे, जैसे आप पढ़ेंगे कर्टल सोनेट, जब आप शायद सोनेट सीक्वेंस के बारे में पढ़ें तो वहाँ पे आप एक टाइप ऑफ सोनेट देखेंगे कर्टल सोनेट, जो सिर्फ 11 लाइन्स के सोनेट है, 10.5 बोलते हैं, लास्ट को तो पोनी टेल बोलते हैं जो लास्ट लाइन होता है, क्योंकि एक फ्रेज होता है। 3 ही पोएम्स इन्होंने लिखी इस फॉर्म में। ऐसे ही टेरिबल सोनेट्स हैं, पर इनकी पोएम से ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है इनकी फॉर्म ऑफ राइटिंग। जैसे इन्होंने फॉर एग्जाम्पल स्प्रंग रिदम टर्न कॉइन किया, जो कि काफ़ी क्लोज है ये मीटर इनका फ्री वर्स से। इंस्ट्रेस टर्म कॉइन किया, इनस्केप टर्म कॉइन किया, तो ये क्या है इसको जानना जरूरी है, क्योंकि किसने कॉइन किया ये ऑलरेडी आ चुका है, तो क्या है ये जान लेना आपके लिए जरूरी होगा, ठीक है। ये तो हो गया पोइट्री। ऑस्कर वाइल्ड आप पढ़ सकते हैं, उसी लास्ट में आपको मिलेंगे। और फिर एक ट्रांजिशन होगा, जैसे अगर आपने शायद एम.एच. इब्राहिम रूटलेज पढ़ी होगी, तो एक टर्म आता है एक्ट ऑफ मॉडर्निज्म, एक्ट ऑफ मॉडर्निज्म हार्डी का टर्म है। ऐसे राइटर जो लास्ट में लिख रहे होंगे, लास्ट विक्टोरियन बोलते हैं, राइटिंग्स में आप पढ़ोगे टेस फॉर एग्जांपल हार्डी से, और इस वर्ड को समझने की कोशिश करना, ये क्या है, हार्डी ने कॉइन किया है, ये है क्या, इसको समझने की आप कोशिश करना, ठीक है। फिर हम एज में आते हैं, जिसको हम 20th सेंचुरी बोलते हैं। 20th सेंचुरी को 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, बिफोर वर्ल्ड वॉर 2, आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2, राइट। इसको आप पर्टिकुलरली मॉडर्न एज और पोस्ट मॉडर्न एज बोलते हैं, राइट। मॉडर्न एज और पोस्ट मॉडर्न एज बोलते हैं ना। पहले तो इनकी अगेन, जैसे मैंने न्यू क्लासिकल और रोमांटिसिज्म में डिफरेंस बताया, लास्ट ईयर का क्वेश्चन था मॉडर्न और पोस्ट मॉडर्न से इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या डिफरेंस है या क्या कंटिन्यू हुआ। जैसे अगर आप बोल रहे हो मॉडर्न एज या मॉडर्निज्म, फिर पोस्ट, पीस मीन्स बियॉन्ड, बाद में पोस्ट मॉडर्न, तो कुछ चीज़ें हैं जो कंटिन्यू हुई हैं, कुछ चीज़ें हैं जो क्रिटिक की गई पोस्ट मॉडर्न में। अप्रोच में क्या डिफरेंस है, कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या डिफरेंस है, एक तो ये चीज़ है। दूसरा, जब आप राइटर्स में जाते हैं, बहुत से राइटर्स हैं और ज़्यादातर एग्जाम में क्वेश्चन आपके यहीं से आते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं केवल पोइट्री का मेंशन करूं तो देयर इज टी.एस. इलियट, द वेस्टलैंड 1922। दो एटलीस्ट, अगर आप वेस्टलैंड तो ऑब्वियसली आप डिटेल में आप नहीं पढ़ पाएंगे अगर आपने नहीं पढ़ा है, तो इसके बारे में
इंफॉर्मेशन होना बहुत ज़रूरी है, कौन कौन सी लैंग्वेज से एल्यूजन्स हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मॉडर्न एज से आता है वो आता है इपीग्राफ से। आप देखोगे फेमस टेक्स्ट में बहुत अच्छे अच्छे इपीग्राफ्स होते हैं। फर्स्ट थिंग तो आपको अगर इपीग्राफ, ईपीटैफ, प्रोलॉग, इन सब में डिफरेंस नहीं पता है तो पहले तो यही चीज जानो कि इपीट्रैफ क्या होता है, प्रोलॉग क्या होता है, इपीग्राफ क्या होता है, इपीथेट क्या होता है, राइट। एक अगर मान लो इसी से क्वेश्चन आ जाए, फॉरगेट अबाउट कि उसके एग्जांपल्स क्या है। अगर आपको इपीथेट, इपीटैफ, इपीग्राफ, प्रोलॉग इनके डिफरेंस ही नहीं पता है तो एग्जांपल्स तो अलग बात हो गई। तो पहले तो वो समझिए क्या है। फिर जितने भी मेजर टेक्स्ट हैं उसकी बिगनिंग में आपको इपीग्राफ्स मिलेंगे। वेस्टलैंड में है बहुत अच्छा, बहुत फेमस सेट्रिकॉन का एग्जाम्पल। पोर्ट्रेट ऑफ एन आर्टिस्ट एज ए यंग मैन में है। मॉडर्न एज में एल्यूजन्स और एपिग्राफ्स बहुत कॉमन हो गए थे तो वो पढ़ना है। लव सॉन्ग ऑफ जे एल्फ्रेड पुफ्रॉक, ये पोएम तो पढ़ना ही पढ़ना है। अगर आप वेस्टलैंड के बारे में पढ़ रहे हैं तो लव सॉन्ग ऑफ जे एल्फ्रेड पुफ्रॉक इज अ मस्ट रीड। लाइंस आपके एग्जाम में डायरेक्टली कोट करके पूछी जाती हैं, किस वर्क की हैं, ऐसा कुछ क्वेश्चन पूछा जाता है, राइट। टी एस एलियट ने बहुत सारे ड्रामास भी लिखे हैं, नाम ड्रामा के पता होने चाहिए बस। और फेमस एसेज भी हैं। टी एस एलियट को एज ए क्रिटिक जब हम पढ़ते हैं तो द मेटाफिजिकल पोएट्स करके एक एसे है जहाँ पे यूनिफिकेशन ऑफ सेंसिबिलिटी एंड डिसोशिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी टर्म इन्होंने कॉइन किया। क्या बोला पोएट्स के बारे में, राइट। आफ्टर द मेटाफिजिकल पोएट्स द डिसोशिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी सेट इन। आफ्टर दैट ये राइटर्स कैन ओनली थिंक, दे कैन नॉट फील। In the neoclassical period, when you think of the romantics, they can feel but they cannot think. Then came Victorian, again they can think but they cannot feel. Again then come modern, which are very similar to the metaphysical poets. मैंने बहुत जल्दी बोल दिया। He said heterogeneous ideas are yoked together. Samuel Johnson said by violence, but he'll be critical to that. So in order to understand what I'm saying, you need to read the text Metaphysical Poet in detail. बहुत ज़्यादा important. Not poetry, metaphysical poets is the name of an essay. Then Hamlet and his problem. Hamlet is an artistic failure, he said. Hamlet and his problem. Hamlet is an artistic failure because of the concept of objective correlative. So what is objective correlative? First thing, who coined the term and why Hamlet is an artistic failure based on objective correlative. Understand that from this text. Then tradition and individual talent. Tradition and individual talent. His theory of impersonality will come in this work only. He'll talk about his theory of impersonality, the poet as a catalyst, all those things in this essay only. He'll define what is tradition, he'll give you theory of impersonality and all those famous quotes that I can think of right now, but I'll not tell obviously, confuse हो जाएंगे। तो वो तीनों चीज़ें आपको पढ़नी। ये मेजर टेक्स्ट है, माइनर भी और भी बहुत से टेक्स्ट हैं, डिटेल में पढ़ना होता तो पढ़ते, पर अभी के लिए बस इतना ही जो आपको पढ़ना है। टी एस एलियट के अलावा W.B. येट्स हैं जो आयरिश राइटर हैं, बट आयरिश लिटरेरी रिवाइवल में और बहुत बड़ा रोल है, एबे थिएटर में बहुत बड़ा रोल है, राइमर्स क्लब में बहुत बड़ा रोल किया है। सो फेमस राइटर हैं, वर्क्स भी हैं। W.B. येट्स से मैंने क्वेश्चंस देखे हैं कि इनकी जो 1913 से पहले की पोएम्स हैं, कलेक्शन ऑफ वर्क्स। 1913 क्यों बोला? क्योंकि W.B. येट्स की हेल्प से टैगोर को 1913 में नोबेल प्राइज़ मिला था। तो इसकी पहले की एक दो पोएम्स 1913 से 1923 के बीच की पोएम्स, जैसे द फॉर एग्जांपल सेकेंड कमिंग जो 1919 में आती है, बहुत फेमस पोएम है, पढ़ना चाहिए आपको। टर्निंग एंड टर्निंग इनटू द वाइडनिंग जायर, द सेंटर कैन नॉट होल्ड द मेयर अनार्की दैट इज थर्स्ट अपॉन इट, थिंग्स फॉल अपॉर्ट, बहुत फेमस पोएम है। लाइन्स इंपॉर्टेंट है, मॉडर्न एज को समझने के लिए पोएम बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। सेकेंड कमिंग, ईस्टर 1916 एक पोएम है जो इसी फ्रेज में लिखी गई, ईस्टर अपराइजिंग के लिए, वो भी आपको पढ़ना चाहिए। द a terrible beauty, nothing changed but a terrible beauty is born, again a famous line that was asked in multiple times in your exam. And then post 1923 क्यों? क्योंकि 1923 में इनको भी नोबेल प्राइज मिल गया। तो उसके बाद इनका कलेक्शन आया टावर, जिसमें आपको पोएम्स लाइक सेलिंग टू बाइजेंटियम जैसी पोएम्स मिलेंगी। क्रोनोलॉजी में मैंने देखा है, इन पोएम्स की लाइन्स आपके एग्जाम में देखी हैं। कलेक्शन ऑफ वर्क्स के नाम पढ़े, जैसे इनका एक प्ले का नाम है जिसमें प्ले भी है, साथ ही साथ कई सारी पोएम्स भी हैं। नाम्स एक बार आप चेक लेना वर्क्स के, आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। नाउ पोइट्री में और भी राइटर्स हैं, देयर इज जैसे मैं ग्रुप की बात करूँ, लिटरेरी मूवमेंट्स आपके सिलेबस में है। सो
पहले आप 1890s में डेकाडेंट मूवमेंट पढ़ते हैं, एस्थेटिज्म जैसे हम बोलते हैं, वॉल्टर पीटर वगैरह, राइट। उसके बाद आप जब मॉडर्न एज में इंटर करते हैं तो आप दादाइज्म पढ़ते हैं, आप सर्लिज्म पढ़ते हैं, कई सारे आर्टिस्टिक मूवमेंट भी है, क्यूबिज्म, फ्यूचरिज्म, मैं यहाँ पे मेंशन नहीं कर रहा हूँ, केवल लिटरेरी जो ऐसे मूवमेंट जो आर्टिस्टिक हुए और लिटरेरी भी हो गए सिर्फ उनका मेंशन करूँगा, क्योंकि यूनिट ये कह रही है। दादाइज्म, सर्लिज्म, फिर इमेजिज्म, ये भी 10 से 20 के बीच का मूवमेंट है। यहीं पे आप पढ़ते हो हार्लेम रेनेसा, आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं, याद रखिएगा। ये सब ऐसे मूवमेंट्स हैं, रेनेसा निग्रीट्यूड में जो कन्वर्ट होगा, इनकी एंथोलॉजीज कौन सी हैं, कौन से ऑथर्स एसोसिएटेड हैं, कौन टर्म कॉइन किया निग्रीट्यूड, कौन टर्म कॉइन किया सर्लिज्म, कौन 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 एसोसिएटेड है दादाइज्म से, जैसे ट्रिस्टन ज़ारा एसोसिएटेड है दादाइज्म से, एंड द ब्रिटॉन एसोसिएटेड है सर्लिज्म से, आपके एग्जाम में पूछा जाता है। मैनिफेस्टो ऑफ सर्लिज्म, इमेजिज्म में एजरा पाउंड है, और भी लोग हैं, राइट। हार्लेम रेनेसा, निग्रीट्यूड, एड्रिल लॉक वगैरह हैं। फिर आप इसी में पढ़ते हैं लॉस्ट जनरेशन 1920s में। सिर्फ आपको क्लब्स के, सिर्फ आप ग्रुप के नाम बता रहा हूँ, जिसमें लिटरेचर भी आपको मिलेगा, ग्रुप्स के नंबर्स, उनके वर्क्स के नाम आपके लिए इंपॉर्टेंट है, राइट। 30s में जाएंगे तो ऑर्डिन ग्रुप है, ऑर्डिन ग्रुप ऑफ पोइट्री, जिसको न्यू लेफ्ट ग्रुप बोलते हैं। ऑर्डिन इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट राइटर, बहुत फेमस पोएम्स हैं जो आपको मिलेंगी। न्यू अपोकलिप्स पोइट्री है 1940s में, न्यू अपोकलिप्स पोइट्री जो इस ग्रुप के अगेंस्ट आता है, वो आपको यहीं पे मिलेगा। और वॉर पोइट्री का एक ग्रुप भी आपको मॉडर्न एज में ही मिलेगा। इतने लिटरेरी मूवमेंट्स जो मुझे अभी याद आ रहे हैं आपको मॉडर्न एज में मिलेंगे। वर्क्स के नाम, मेंबर्स के नाम, ठीक है, तो वो सारी चीज़ें आपको देखनी होंगी इस पीरियड में। देन कम्स टू राइटर्स, जैसे मैंने बताया ऑर्डिन की पोएम्स बहुत फेमस है। इन मेमोरी ऑफ W.B. Yeats, सितंबर 1, 1939, पोएम्स, पोइट्री मेक्स नथिंग हैपन, आपके एग्जाम में लास्ट ईयर क्वेश्चन आया, वो क्या है वो आपको देखना होगा। अदर देन दैट, अगर मैं पोइट्री अभी छोड़ दूँ फॉर नाउ, W.B. Yeats और T.S. Eliot का नाम लेने के बाद, तो राइटिंग्स में, नॉवेल्स में वर्जीनिया वुल्फ, ऐसे क्रिटिक भी इंपॉर्टेंट है। A Room of One's Own, अदर देन वर्क्स भी हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। मिसेस डॉलोवे, एटलीस्ट 25 का वर्क है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। एंड जेम्स जॉयस, राइट। फिर आप पढ़ते हैं फॉर एग्जांपल फर्स्ट ओडिपस नॉवेल सन्स एंड लवर्स, लॉरेंस, D.H. Lawrence is important writer. E.M. Foster is an important writer. Passes to India. When I say important, you don't need to read them in detail. You should know the name of works and at least Passes to India की summary. D.H. Lawrence में name of works and at least summary of Sons and Lovers. James Joyce में Passage, A Portrait of an Artist as a Young Man की summary and name of works along with chronology. नेम ऑफ वर्क्स, जैसे यहाँ से कलेक्टिवली क्रोनोलॉजी पूछी जाती है। एक वर्क वर्जीनिया वुल्फ का दे देंगे, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बोल दूँ मिसेस डॉलोवे, ठीक है। एक वर्क आपको जेम्स जॉयस का दे देंगे, सपोज अगर मैं बोल दूँ फिनेगन्स वेक, यहाँ पे इपीफेनी टर्म कॉइन कहते हैं उन्होंने, ठीक है। लॉरेंस को बोल दूँ फॉर एग्जांपल, चलो सन्स एंड लवर्स ही बोलता हूँ, 1913 का, ठीक है। और एक राइटर है जिन्होंने लिखा ब्रेव न्यू वर्ल्ड, 1932 का टेक्स्ट है जो ज़्यादातर क्रोनोलॉजी में रहता है, इसीलिए मैं मेंशन कर रहा हूँ। हक्सले 1932 और इनका पैसेज टू इंडिया, ये वर्क्स क्रोनोलॉजी में बहुत बार पूछे गए हैं, तो इन राइटर्स को तो मेजर ऑथर्स मान सकते हैं। अगर मैं माइनर की लिस्ट लूँगा तो अगेन ये लिस्ट बहुत बड़ी हो जाएगी। फिर जब आप पोस्ट मॉडर्निज्म में पहुंचते हैं, यानी कि सेकेंड फेज ऑफ 20th सेंचुरी में पहुंचते हैं, तो पहले तो आप मल्टीपल टाइप्स ऑफ थिएटर्स पढ़ते हैं, जैसे थिएटर ऑफ, वैसे पहले ही आप एपिक थिएटर पढ़ चुके होंगे, वो मॉडर्न एज में आ जाता है, पिस्कैटर, बर्टोल्ड ब्रेcht, बट यहाँ पे थिएटर ऑफ एब्सर्ड पढ़ेंगे, उससे जुड़े हुए राइटर्स को पढ़ेंगे, है ना, सैमुअल बेकेट जैसे राइटर्स, पिंटो जैसे राइटर्स। फिर आप थिएटर ऑफ ऑपरेस्ट पढ़ेंगे, एंटेनर थॉट जैसे राइटर्स। थिएटर ऑफ क्रुएलिटी पढ़ेंगे, उससे जुड़ा हुआ इंसान किसने कॉइन किया टर्म, बॉल कौन है। पुअर थिएटर पढ़ेंगे, ये कौन है,
ठीक है। फिर अगर आप ग्रुप ऑफ पोइट्री में जाएं, जैसे एंग्री यंग मैन राइटर्स हैं, वो कौन है, मेंबर्स कौन है, कौन कौन उस ग्रुप का पार्ट है, एंग्री यंग मैन मूवमेंट। किचन सिंक ड्रामा में कौन कौन से राइटर्स हैं, कौन से वर्क्स हैं उनके, किचन सिंक ड्रामा, राइट, वो कौन राइटर्स हैं। मैरिशियन पोएट्स हैं, 1970s में एक मैंने पोएम अपने पेड बैच में शेयर की थी, मैरिशियन पोएट्स का ग्रुप है, वो कौन से राइटर्स हैं। उसके पहले 50s में ही मूवमेंट पोइट्री है, मूवमेंट पोइट्री, कन्फेशनल पोइट्री, कन्फेशनल पोइट्री, ये ग्रुप्स हैं। अब इन ग्रुप में दो दो तीन तीन राइटर्स के नाम याद रखने हैं, उनके वर्क्स के नाम याद रखने हैं, एंड दैट इज मोर देन इनफ इन पोस्ट मॉडर्निज्म। बहुत डिटेल में नहीं पढ़ना है। इसके बाद पोस्ट मॉडर्निज्म को पढ़ने का बेस्ट वे जो है वो क्या है कि एक तो आप पोस्ट मॉडर्न रीटेलिंग सर्च करिए, फेमस पोस्ट मॉडर्न रीटेलिंग्स, एक प्रॉम्प्ट है जो आप यूज़ कर सकते हैं चैट जीपीटी पे या विकिपीडिया पे, गूगल पे, कहीं पे भी सर्च करिए, फेमस पोस्ट मॉडर्न रीटेलिंग्स निकालिए, उनको याद रखिए, ठीक है, क्योंकि यही एक तरीका है याद रखने का। फेमस पोस्ट मॉडर्न ट्रायोलॉजीज पढ़िए, हम आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आते हैं। इसके अलावा जो लास्ट 20 ईयर्स के बुकर अवार्ड विनिंग राइटर्स हैं, बुकर अवार्ड विनिंग राइटर्स हैं, नोबेल अवार्ड विनिंग राइटर्स हैं, नोबेल प्राइज़ अवार्ड विनिंग राइटर्स हैं, उनको पढ़िए। और इतने में आप उनको पढ़ने का मतलब ये नहीं है कि आपको डिटेल में पढ़ना है, किस वर्क के लिए मिला है वो जानना है, और अगर फेमस राइटर है तो लास्ट 5 ईयर्स में तो एटलीस्ट आपको ईयर भी पता होना चाहिए कि 21 से 25 में, जो 21 से फॉर एग्जांपल 2021 से 26 के बुकर अवार्ड विनिंग राइटर्स हैं, नोबेल अवार्ड विनिंग राइटर्स हैं, उनका कैनन आपको छांटना है, कौन कौन से वर्क लिखे हैं, किस तरीके की राइटिंग्स वो लिखते हैं, वो आपको जानना चाहिए। दैट इज़ हाउ one unit of British, just one unit, just one part of your syllabus which is mentioned as what we call, just a second, पहली यूनिट जो सिर्फ एक पार्ट उस पहली यूनिट का जिसको हम बोल रहे हैं हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश एंड इंडियन लिटरेचर, उसका केवल हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश, जो ना इसे हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, आई मीन हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंग्लिश लिटरेचर, बहुत कॉमन चीज़ है, उसका एक पार्ट मेजर ऑथर्स, मेजर टेक्स्ट और लिटरेरी मूवमेंट्स, इतना आप कंप्लीट कर पाएंगे। आज जितना मैंने क्लास में, आई थिंक इट्स बीन मोर देन एन आवर सिंस आई एम टेलिंग व्हाट टू रीड, एंड इतना ये मेजर है सिर्फ, दैट यू विल बी रीडिंग इन द फर्स्ट यूनिट विच यू आर कॉलिंग हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर और हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश लिटरेचर। सेम गोज विथ हिस्ट्री ऑफ इंडियन लिटरेचर्स। सो इंडियन लिटरेचर में फेवरेट मतलब फेमस राइटर्स, यानी कि इंडियन इंग्लिश लिटरेचर तो अलग से ही दिया हुआ है, आप देख सकते हैं, यानी कि इंग्लिश राइटिंग की बात ये नहीं कर रहा है, यानी कि आपको फेमस मेजर ऑथर्स ढूंढने हैं अलग अलग लैंग्वेजेस में, मेजर टेक्स्ट ढूंढने हैं अलग अलग मूवमेंट्स, अलग अलग इंडियन लैंग्वेजेस में और इंडियन लिटरेचर में, और मेजर लिटरेरी मूवमेंट्स ढूंढने हैं इंडियन लिटरेचर में। जैसे मैं बताऊं आपको, लास्ट ईयर आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया, एक बहुत अच्छा प्रोग्रेसिव राइटर एसोसिएशन ग्रुप था 1930s में, अंगारे उनका एंथोलॉजी चलता था, उसमें आपको मुल्क राज आनंद मिलेंगे, इंग्लिश राइटर में आई थिंक वही राइटर है, मुंशी प्रेमचंद मिलेंगे, उर्दू के बहुत से राइटर्स हैं, उस एसोसिएशन को कम फ्रेम किया गया, ये क्वेश्चन पूछा गया, जो कि आई बिलीव इंडियन लिटरेचर के लिटरेरी मूवमेंट से क्वेश्चन है। यानी कि आपको एटलीस्ट मेजर राइटर्स 2024 में जयशंकर प्रसाद, और जी सुमित्रा पंदरनंद, ये जो हिंदी लिटरेचर वाले राइटर्स हैं, उनके वर्क्स के नाम को मैचिंग में क्वेश्चन पूछा गया था। ऐसे ही बंगाली लिटरेचर है, अभी तो बंगाली लिटरेचर बहुत ज़्यादा इंग्लिश में हमारे पास अवेलेबल है, या डिटेक्टिव फिक्शन जो बंगाली लिटरेचर से आ रहा है, लास्ट ईयर आपके एग्जाम में वहाँ से क्वेश्चन पूछा गया। उड़िया में दलित एंथोलॉजीज लिखना शुरू की जा चुकी हैं, दलित लिटरेचर से क्वेश्चन आ सकता है जो मराठी लैंग्वेज में हुआ और इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया, वो सारी चीज़ें जो है वो हिस्ट्री ऑफ इंडियन लिटरेचर के पार्ट में जाता है। This is what you have to read in history of Indian English and Indian literature. What I'll do tomorrow, we'll meet here tomorrow, and I'll come up with few important topics from and questions from history of whatever we have covered today. We'll practice tomorrow, and after that I'll introduce you with Indian writing in English, what we need to do there, and the next day we'll follow the same pattern. Okay, so for now I'll stop it here. If you're watching this video for the first time,
We have already launched the batch, a crash course for this. Within the 50 days that are left, we are going to cover everything that needs to be covered, major authors, not just from one unit but from other unit as well. This is the time when we read things smartly and not there is no need to go back and read the books. You have no time for those things now. So we are doing that smartly in our classroom as well. If you want to join, you can join. Otherwise, please follow this channel, and we'll be meeting here. For now, we'll be meeting here every day, almost every day, at least 4 days in a week. We'll be discussing important things. We'll be discussing, and not just introducing you what you have to do. We'll be reading those things together here. I'll be solving few questions with you here. Make sure you join the channel, and we'll meet tomorrow, and we'll continue from here. Thank you so much.